Assalamualaikum students, hope you all are doing well. Let's get start our today's lesson. In our previous lecture we have discussed about elements. Now we are going to study about classification of elements. The elements present on earth are classified into two groups. These groups are metals and non-metals. About 70% elements are metals and the remaining 30% elements are classified as non-metals. तो जैसे हमने अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमारे पास टोटल 109 एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो इस साइंटिस्ट ने इन 109 एलिमेंट्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। ये जो ग्रुप्स हैं ये मेटल्स और नॉन मेटल्स कहलाते हैं, ताकि इन एलिमेंट्स को स्टडी करना हमारे लिए इजी हो जाए। जितने भी एलिमेंट मौजूद हैं उनमें से जो 70% एलिमेंट हैं वो मेटल्स होते हैं, जबकि 30% एलिमेंट जो हैं वो नॉन मेटल्स में क्लासीफाई किए गए। Firstly, we will discuss about metals. Metals are actually shiny or grey solids. They can be molded or shaped into sheets or into wires by heating or by pressing. Metals are the good conductors of heat and electricity. It means that they allow them to pass through. This is the reason why we use copper wires in our home. Copper is actually a metal and it is a good conductor of electricity. That's why the electrical wires that are used in our home are made up of copper. There are some other examples of metals like silver, sodium, zinc, calcium, etc. All these metals are good conductors of electricity and they have same physical properties. तो स्टूडेंट्स, जो मेटल्स हैं ये सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं और ये शाइनी और ग्रे कलर के सॉलिड्स होते हैं। और स्टूडेंट्स, जो मेटल्स होते हैं इनको हम पिघलाकर मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स दे सकते हैं। जैसे मेटल्स की शीट्स होती हैं, मेटल्स की वायर होती हैं। इस तरह जो मेटल एलिमेंट्स हैं उनको मुख्तलिफ़ शेप्स दी जा सकती हैं हीटिंग के थ्रू और प्रेसिंग के थ्रू। मेटल्स होते हैं ये गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, यानी इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे तरीके से अपने अंदर से पास करते हैं। इस वजह से हम जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में वायर्स यूज़ करते हैं वो मेटल की बनी होती हैं। फॉर एग्जांपल कॉपर वायर, हमारे घरों में जो बिजली के गुजरने के लिए हम वायर यूज़ करते हैं वो कॉपर वायर होती है। और कॉपर जो है वो एक मेटल है, यानी इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है। इस वजह से इसको मुख्तलिफ़ किस्म की इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह कुछ और एग्जांपल्स भी मेटल्स के ले लेते हैं, जिनमें सिल्वर, सोडियम, जिंक, कैल्शियम, मर्करी, आयरन, कॉपर, ये सारी जो है ये मेटल्स की एग्जांपल्स हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नॉन मेटल्स. The elements other than metals are known as non-metals. Non-metal exist in solid, liquid or in gaseous form. Non-metals are actually brittle. It means that they have no shiny appearance. And the non-metals can't be molded or shaped into sheets or wire or into some other forms. Non-metals are the non-conductors. It means that they doesn't allow electricity and heat to pass through them. Here are some examples of non-metals such as carbon, hydrogen, nitrogen, sulfur. As you can see in diagram, in this diagram this is sulfur element and this is bromine, as bromine is in liquid state, and this diagram is of carbon. So we can see that non-metals are exist in solid, liquid or in gaseous form, as hydrogen or nitrogen elements are present in the form of gases, bromine is in the form of liquid and sulfur is present in the form of solid. तो स्टूडेंट्स, जो नॉन मेटल्स हैं वो कौन से एलिमेंट्स हैं? मेटल्स के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स बचते हैं वो सब नॉन मेटल्स कहलाते हैं। नॉन मेटल्स जो होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ मेटल से डिफरेंट होती हैं। नॉन मेटल सॉलिड, लिक्विड और गैशियस तीनों स्टेट्स में पाए जाते हैं। इसके अलावा नॉन मेटल जो होते हैं वो ब्रिटल अपीयरेंस के होते हैं, यानी इनकी शाइनी अपीयरेंस नहीं होती, इनकी जो अपीयरेंस है वो भुरभुरी होती है। और नॉन मेटल्स जो हैं इनको हम हीट करके और प्रेस करके मुख्तलिफ शेप्स नहीं दे सकते, यानी इनको तारों और शीट्स की फॉर्म में ढाला नहीं जा सकता। इसके अलावा नॉन मेटल जो है वो नॉन कंडक्टर्स है, यानी इलेक्ट्रिसिटी और हीट को अपने अंदर से पास नहीं करते। इस वजह से इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में हम नॉन मेटल्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते। नॉन मेटल्स की जो कुछ एग्जांपल हैं उनमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फ़र वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा जो डायग्राम में आप लोग देख रहे हैं, जो येलो कलर के डायग्राम आपको नज़र आ रही है, ये है सल्फ़र, जबकि नीचे जो बोतल के अंदर ऑरेंज कलर का लिक्विड है ये है ब्रोमीन,
जो कि लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। और जो ब्लैक कलर की डायग्राम आपको नज़र आ रही है ये है कार्बन की। जैसे हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कोल की एग्जांपल डिस्कस की थी, तो हमने कहा था कि कोल जो है वो कार्बन एटम से मिलकर बना होता है। तो कार्बन जो है वो एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल जो है इसमें मैटर की तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं, यानी जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह जो है ये गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं, जबकि ब्रोमीन जो है वो लिक्विड फॉर्म में है। और इसी तरह से सल्फर, कार्बन वगैरह जो है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। You must have all heard the terms metals and non-metals. Can you look around and see if they exist in your surroundings? What is your table made up of? Aluminium or wood? What about the phone or the laptop you're viewing this video on? Is it made up of metals and non-metals? As a matter of fact, it is. Almost everything around will be made up of either a metal or a non-metal. Let us take, for example, the ornaments. Any of the ornaments will do. What do you have to say about them? You will observe that most of them are made up of gold or silver. Let us look at them closely. Do they have a shining surface? Or even the aluminium utensil in the kitchen? Does it shine? Of course, both gold and aluminium have a certain shine. Do you know what this shine is called? Well, it is called luster, and as both gold and aluminium are metals, this is known as metallic luster. It is the amazing property of metals to be beaten into sheets. Do you know another important property of metals? Have you ever seen copper wires or thin gold wires used to make jewelry? Metals, by nature, can also be drawn into wires. Metal utensils are used for cooking, aren't they? Why do you think they're used for this purpose? Which energy do we need to cook food? Heat energy. Correct. We need heat energy to cook food, and metal utensils are good conductors of heat. They help transfer heat evenly through the entire surface and provide even heating. No doubt, most metals are known to be good conductors of heat. Do you know the two best conductors of heat? They are silver and copper. Two other metals like lead and mercury are comparatively poor conductors of heat. Electric wires were also made up of metals, right? Why is that? It's because they are good conductors of electricity too. If we have a battery and a bulb connected in a circuit with a metal wire, you will see that the bulb will glow where the switch is closed. And because they are good conductors of electricity, they are coated with rubber-like material. This rubber-like material acts as an insulator which protects us from being electrocuted if we touch the wire by mistake. In a nutshell, non-metals like carbon, iodine or sulfur do not have luster. They do not shine and are brittle in nature. Non-metals can also be gases like oxygen, hydrogen or solids like carbon, sulfur, etc. Do you know of any non-metal in the liquid state? Bromine is the only non-metal which is in the liquid state. तो स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हमने एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन यानी एलिमेंट्स की ग्रोहबंदी को डिस्कस किया। इसमें हमने देखा कि एलिमेंट्स को साइंटिस्ट ने दो बड़े ग्रुप्स में तकसीम किया है, जो कि धातें यानी मेटल्स और गैर धातें यानी नॉन मेटल्स कहलाते हैं। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन आता है कि धातों से क्या मुराद है या धातें किसे कहते हैं। तो तकरीबन 70% एलिमेंट्स धातें हैं। ज़्यादातर धातें चमकदार, सुरमई, ठोस होती हैं और धातों को हरारत और दबाव से पिघलाकर मखसूस शक्ल में ढाला जा सकता है। धातें बिजली और हरारत की अच्छी मौसूल होती हैं, यानी जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि जो मेटल्स हैं यानी धातें वो हरारत और बिजली की अच्छी कंडक्टर्स हैं। इसी वजह से हम इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में मेटल वायर्स यूज़ करते हैं। इसके बाद यहाँ टेबल में मेटल्स की कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, जैसे एल्युमिनियम, कैल्शियम, तांबा यानी कॉपर, लोहा, सीसा, पारा, चांदी, सोडियम, जिंक वगैरह। फिर है कि गैर धातों से क्या मुराद है। धातों के अलावा बाकी जितने एलिमेंट्स हमारे पास बचते हैं वो सब गैर धातें कहलाते हैं। इनके खवास धातों से मुख्तलिफ होते हैं। गैर धातें ठोस, माया या गैस हो सकती हैं। और फिर हमने देखा कि जो गैर धातें होती हैं ये ब्रिटल होती हैं, इस वजह से इनको पिघलाकर किसी मखसूस शक्ल में ढाला नहीं जा सकता। और गैर धातें जो हैं ये बिजली और हरारत को अपने अंदर से गुजरने नहीं देती, इस वजह से गैर धातें जो हैं वो नॉन कंडक्टर्स कहलाती हैं।
और यहाँ टेबल में कुछ गैर धातुओं की एग्जाम्पल दी गई है, जैसे कार्बन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर वगैरह। ओके स्टूडेंट्स, आज का लेसन आपका यहीं तक है। इसमें जो आपको शॉर्ट क्वेश्चंस बताए गए हैं, जो एग्जाम्पल्स बताई गई हैं, इनको आप लोग अच्छी तरह से तैयार कर लें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।